Let us see how to get the un value. Un is equals to 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial means definitely for 1 we have to write that n factorial. X power 3, x power 2, x power 1 means x power 0 can be written as x power n minus 1. 4 power 3, 3 power 2, 2 power 1 means 1 power 0. Any number power 0 is 1. 1 can be written as n. Power 0 means n minus 1. This is your un value. See how I am getting that? 4 factorial, 3 factorial, Sir, 2 factorial, 0 factorial is 1. sir, X power is increasing now, sir. Yeah, increasing, but starting with the, see, 3, 2, 3, 2, 1 means it's a 0. Mm, Starting with 0 now. yes, sir. Here Okay. our this term 1 can be written as 1 can be written as 1 to the power of 1 minus 1 x to the power of 1 minus 1 by 0 factorial. Okay, by Okay, sir. 0 factorial. If you simplify, aggregate, our answer is this only. This one, 1. Understand? That Yes, sir. is C and write it. That is your first term is done. Now, I'm not neglecting anything here. So immediately we can find out un plus 1 here. That is, every n is replaced with n plus 1. This is n plus 1. And now, n plus 1 minus 1 cancel. If you allow me, I want to write only n here. And moreover, here also only n here. Because plus 1 minus 1 cancelling here. N can be written as n plus 1 factorial. Then we have to move on for finding un by un plus 1 value. That can be written as n to the power of n into n to the power of minus 1. Is this accepted? X power n into Yes, sir. x power minus 1 divided by n factorial multiplied by n plus 1 factorial divided by, here I want to take n power n common. We are left with 1 plus 1 by n raised to the power of n and x power n. Now look at that, how many terms are cancelled? How many terms are cancelled? Look at this n power n with this cancel, right? Yes. X power n with this cancel. Understand? Now next step we can move on. Un by un plus 1 value is un by un plus 1 value is equals to, okay, n power minus 1 x power minus 1 divided by n factorial multiplied by n plus 1 factorial can be expanded as n plus 1 into n plus 1 minus 1 factorial divided by 1 plus 1 by n raised to the power of n. Now if you notice, one more time some of the terms are cancelled. Plus 1 minus 1 cancel, n factorial cancelling with this n factorial. Next step is un by un plus 1 can be written as n to the power of minus 1 into x to the power of minus 1 divided by nothing is there means 1. Here let me take n common. Yes, assume is okay all the steps. 1 plus 1 by n by 1 plus 1 by n raised to the power of n. Look at that, this one. Here n power 1 cancelling with n power minus 1. Bases are equal, power should be added. Okay. Now no more n is left out. Let us apply limit. Let us apply limit and tending to infinity on both sides. Yes. Taking limit and tending to infinity un by un plus 1
is equals to x power minus 1 can be written as 1 by x, which will be out limit n tends to infinity. What's left over here? Come on, everybody, give me the answer. 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n raised to the power of n. This is equals to 1 by x. Come on, reply me. Limit will go to the numerator. Limit n tends to infinity. 1 plus 1 by n, and moreover, limit will go to the denominator also. This is divided by limit n tend to infinity 1 plus 1 by n raised to the power of n. Numerator value is, what is numerator value? 1 by x is there, of course, into 1 by x. Numerator value is, as n tends to infinity, 1 by n tends to 0 means 1 left, and denominator value is e. It means our answer is 1 by ex. Is that okay for all the students? Yes? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes. Yes, So sir. means e is involved here. E is involved means we have to apply definitely logarithmic test. But we don't stop here. We have to write by ratio test. By ratio test. If this value 1 by ex greater than 1, 1 by ex greater than 1, which implies that reciprocal ex is less than 1, which implies that ex is less than 1, which implies that x is less than 1 by e. Namrata, can you give the ring to Hajara that class is already started? Then convergent. 1 by ex less than 1, which means that taking reciprocal ex is greater than 1. This implies that dividing, matlab, x value is greater than 1 by e. Then divergent. Then divergent. And one more step of this one is, if 1 by ex is equals to 1, this implies that ex value is equal to 1. This implies that x value is 1 by e. Test fails. Test fails. Test fails means we should apply that. What to do here? X is equal to 1 by e. X is equal to 1 by e. We have to substitute. Where we have to substitute? That question arises. Here in this step we have to substitute. This value x is equal to 1 by e, we have to substitute here, right? That is in the next page. So what happened when x is equal to 1 by e? Okay, x is equals to 1 by e. Let's see what happened. यहाँ पे रख रहा हूँ. 1 by x becomes, this implies that if you take the reverse, 1 by x becomes e only. So then un by un plus 1 becomes what? Un by un plus 1 becomes, here we are putting this one x की प्लेस पे रख रहे. एक्चुअली ये x पावर माइनस 1 है. अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर एक और स्टेप लिख दूँ उसका. अच्छा, यहाँ लिख देंगे, बट यहाँ पर आ गया ना, लिमिट अप्लाई करने वाला उससे पहले का स्टेप रहता हो. ओके, तो नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं यहाँ पर भी. when x is equal to 1 by e, un by un plus 1 वैल्यू क्या हो रहा है देखिए आप. इट्स becomes 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n raised to the power of n into x पावर माइनस 1 था, विच इज 1 by x. 1 by x की वैल्यू है e. देख लीजिए आप, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं 1 में. x पावर माइनस 1 का मतलब 1 by x होता. 1 by x की वैल्यू e, ये दोनों सेम. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. Taking logarithm on both sides.
taking log on both sides. So if you take log on both sides, log of un by un plus 1, log of un by un plus 1 is equals to log of 1 plus 1 by n divided by 1 plus 1 by n raised to the power of n into e. And we know that assuming this total term as a and this b, log a into b can be written as log a 1 plus 1 by n by 1 plus 1 by n raised to the power of n log a, and then plus log b, that is log e, again log a by b form. This is numerator as a, denominator as b. Log a by b can be written as log a minus log b. So let's apply that one. This is the value of log of un by un plus 1 value, log of un by un plus 1 value, which is equals to log a means log 1 plus 1 by n minus log b means log 1 plus 1 by n raised to the power of n log a minus log b plus, we know that log e value is 1. So apply the formula individually here, minus keep it as it is. Before that, I have one more step, that is log of 1 plus 1 by n. Okay, log x to the power of n can be written as n log x, means minus n log 1 plus 1 by n plus 1. Now you see here, some of the student what they are doing, log of 1 plus 1 by n, log of 1 plus 1 cancel, minus n plus 1 is the answer बोल के लिख, that is wrong. Here we are applying the formula, and here also we are applying the formula, keeping n as it is. So write the formula, it's a 1 by n minus 1 by 2n square plus 1 by 3n to the power of 3 minus and so on, one bracket minus n, and then we have to apply one more time that formula, one more time, 1 by n minus 1 by 2n square plus 1 by 3n to the power of 3 minus and so on, bracket close, plus 1. And here what to do here is, we have to operate this one with this one with this one with this also. What happened here is, ये 1 by n तो as it is रह जाएगा, ये minus 1 by 2n square, ये plus 1 by 3n to the power of 3 minus and so on, minus and so on. And if you multiply, we get what? Minus 1 here, minus into minus plus 1 by 2n here. Okay, minus 1 by 3n to the power of 2 here, and so on, and so on, and so on, plus 1. So what to do here is, cancelling this one, this minus 1, this plus 1 cancel. अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, इसमें से और इसमें से 1 by n को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्लियरली, 1 plus 1 by 2 left, if I am taking 1 by n कॉमन प्लस, अब देखो इसमें से और इसमें से, ये टर्म में से और ये टर्म में से आई एम टेकिंग 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई 2, यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई 3. आई एम टेकिंग 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन, आई एम टेकिंग 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन, एंड सो ऑन. अब कुछ नहीं बचा वहां पर, एक किसकी वैल्यू कर रहे थे अपन, लॉग ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस 1 की वैल्यू कर रहे थे, ठीक है ना. सो नाउ इफ यू एड इट, 1 plus 1 by n is what? Come on, 1 plus 1 by n is 1 plus 1 by 2 is, कोई भी आंसर ही नहीं दे रहा, मैं कर रहा हूँ 3 by 2 into 1 by n means 3 by 2n. आप चाहे तो उसको अलग लिख लो,
आपको और अच्छा दिखेगा। कोई भी आंसर नहीं दे रहे मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। प्लस है माइ सर। नहीं, माइनस, I just joined, right? So I'm trying to go with the flow. ओके, माइनस 5/6 इंटू 1/n², इट्स द वैल्यू ऑफ log of un/un+1. Okay, so it's done. Now one more step is required, that is we have to multiply n on both sides. So That can will be done. you explain the pink part? See what I am doing after multiplying with n and n cancel, -1, minus into minus plus n and n square cancel, 1/n left. ये पिंक पार्ट में 1/n को कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर से अगर 1/n कॉमन ली Sir, तो इधर one 1 doubt, बचता। sir. या Sir, when we are applying log for un/un+1, हम्म, वहाँ पे we can take thing, the formula, sir, 1 + 1/n whole power n equals to e. तो Log लिमिट e अप्लाई we नहीं can करे ना, take in, लिमिट sir. अप्लाई नहीं करे ना। Oh, okay, sir. लिमिट अप्लाई करे तो ई होता, वो लिमिट अप्लाई Okay. करे कहाँ पे? Yeah. Okay, okay, ओके, okay, sir. सो योर Okay, डाउट sir. इज 1/n वी आर टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1/2, 1 + 1/2, एंड देन टेकिंग 1/n² कॉमन मीन्स here -1/2 left, here -1/3 left. So these two values added, these two values also added. Now moving to the next step, that is taking, मतलब n से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, n times log of un/un+1 is equals to, if you multiply with n, I like that, you will get 3/2 into 1/n. Okay, plus here also we have to multiply with n, minus 5/6 into 1/n² left over here. आप देख सकते प्रीवियस पेज में n से दोनों को मल्टीप्लाई कर, what is the benefit of this? Yes. Immediately these are the terms are cancelled, n से ये स्क्वायर चले जाएगा, Yes, sir. ये n से ये n चले जाएगा. Now finally take the limit n tending to infinity, n times log un/un+1 value is equals to limit n tending to infinity 3/2 minus Minus 1. 5/6 into 1/n, and so on. Now limit will go to this term, limit of the constant is constant itself, and then limit will go to this term, 1/n will become 0. So finally we are left with 3/2 only, which is greater than 1. So by logarithmic test, series convergent, series convergent, and the special case what we are dealing when 1/x value is equal to e. So conclusion we have to write, hence, hence, given series convergent if, I don't know what happened here. Convergent means what is the situation? X is less than, so x is less than में भी हो रहा और equal to में भी हो रहा, less than 1/e में convergent हो रहा, and divergent when if x is greater than 1/e. End of this problem. This is the first page of this. You can see here, this is your first page. सर ये प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से थोड़ा रिवीजन करो ना, थोड़ा ऊपर हाँ ऊपर। वही, जो फर्स्ट पेज देख लो आप, फर्स्ट पेज देखो, इसलिए बता रहा हूँ मैं फर्स्ट पेज आपको, ठीक है ना? ये फर्स्ट पेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ un. हाउ टू गेट इट? पैटर्न देखिए, 4 फैक्टोरियल से स्टार्ट, रिवर्स वे में पैटर्न को चेक करना. 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स ये फर्स्ट टर्म जो है ना, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म वो ऐसा बनेगा, 1 कैन बी रिटन एज 4 3 2 मीन्स 1 फैक्टोरियल बोलते हो n फैक्टोरियल, 1 से स्टार्ट हो रहा तो n, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 मीन्स x पावर 0,
can be written as x power n minus 1. Now 4 power 3, 3 power 2, 2 power 1 means 1 power 0. 1 power 0 means 1 power 0 को ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, 1 तो यू एन की वैल्यू, इससे आपको बन गया यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस 1, टेकिंग कॉमन एंड कैंसलिंग, ठीक है ना। फिर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, आंसर 1 बाई ई पे डिपेंड हो रहा है। सो 1 बाई ई मीन्स ई आ गया, मतलब आपको लॉगरिथमिक टेस्ट। सो ये स्टेटमेंट उसका रिलेटेड लिखे आप, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स। देन लॉग के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, लॉग ए बाई बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग एक्स पावर एन, ये सारे फार्मूलों को अपन यूज करें, फिर थोड़े टर्म्स को कैंसिल करें, एन से मल्टीप्लाई करें, फाइनली लिमिट अप्लाई करें, कंक्लूजन हो गया। एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए आप, फिर अपन ये सेशन को अपन कंप्लीट कर देंगे। आज आपके 2 सेशन हो गए, मैं बोला ना आपको 2 सेशंस कोशिश करेंगे रोजाना, किसी वजह से कभी नहीं हुए तो एक्सक्यूज मी, प्लीज सॉरी, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, बट एक तो करेंगे कैसा भी। थर्ड क्वेश्चन है ये टॉपिक का, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, डोंट हैव द टाइम, एक्स प्लस, प्लीज एवरीबडी लिसन, कौन सा भी एक साइन से सुन लिए तो भी बस हो जाएगा आप, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, मे बी वो 4 क्यूब एक्स क्यूब होगा शायद। तो बहुत आसानी से nth टर्म बनता, देखो जरा मैं बना रहा हूँ सोल्यूशन, पूरे सेम सेम वैल्यू છે 3 पावर 3 x पावर 3 3 फैक्टोरियल, पूरे सेम सेम ही છે, यूएन भी सेम ही चाहता, देख लो आप कैसा आता, बोलो, n पावर n x पावर n बाई n फैक्टोरियल, खत्म। n का वैल्यू 1 दे दो, 1 पावर 1 x पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, ये देखो आ गया, 2 x पावर n पावर 2 x पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया, n पावर 3 x पावर 3 3 पावर 3 3 फैक्टोरियल, ये आ गया ना, बहुत आसानी से आ गया। तो यू एन प्लस 1 की वैल्यू इमीडिएटली आप लिख देना, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, कम ऑन एवरीबॉडी, n प्लस 1 रेस टू द पावर ऑफ n प्लस 1 Whole n x plus टू द 1 पावर ऑफ n प्लस by 1 बाई n प्लस 1 n plus 1 whole power. फैक्टोरियल। अब मैं बहुत सारे स्टेप्स को स्किप करने वाला हूँ, अच्छे से देखिए, यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू कैन ऑल्सो स्किप दिस स्टेप्स इन एग्जाम, n power n, the examiner can easily understand by n factorial multiply by second fraction reverse, रिवर्स मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल आता, Whole power. यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर दो मैं, n इंटू n प्लस 1 n माइनस plus 1 1 फैक्टोरियल minus 1. डिवाइडेड बाय, Yes. इसको भी मैं स्प्लिट करके लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ऐसा मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, n प्लस 1 रेस टू द पावर ऑफ n इंटू n प्लस 1 रेस टू द पावर ऑफ 1, x पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज x पावर n इंटू x पावर 1, ये पूरे चीज़ें आपके सेकेंडरी बेसिक क्लासेस में आ चुके हैं ये सब, एक्स पावर एन कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल भी चले गया, और ये एन प्लस 1 से ये एन प्लस 1 भी चले गया। तब क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया देख सकते हैं आप, Yes, sir. यू एन बाई यू एन प्लस 1 is equals to, here only n factorial n power n is left, for our convenience I am writing divided by 1, multiply by न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, 1 बाई, इसमें से n पावर n को अगर मैं कॉमन ले लिया, वी आर गेटिंग 1 plus 1 by n raised to the power of n into 1 by x is also left, don't forget x is also there. Now still if you notice, these two are cancelled. Okay, now it is convenient to take limit n tends to infinity on both sides, un by un plus 1 value, and we know that 1 by x is a constant term, will be taken out of the limit n tending to infinity. Okay, can you tell me what is left off? Only 1 plus 1 by 1. n raised to the power of n left off, and numerator Yes. will go, limit will go to the numerator, will give you 1 is the answer, and limit will go to the denominator, give you e is the answer, E. 1 by ex is left over here। मतलब आपको Yes. ये बात कंफर्म हो गई कि अब यहाँ से
यहां से जो रूट जाएगा वो रूट जाएगा लॉगरिथमिक टेस्ट की तरफ. अंडरस्टैंड? Yes, sir. बाय रेशियो टेस्ट. By ratio test. If now write down all the three statements simultaneously. 1 by ex greater than 1. The mathematical step of this one is ex should be less than 1, which can also be making x as a subject means dividing e on both sides. X is less than 1 by e, then convergent. The second similar statement, just the inequality will change. Ex is greater than 1. That implies that x is greater than 1 by e. Then please in exam don't write short form, use the full form. Divergent pura. If 1 by ex is equal to 1, thus if you take the reciprocal, ex is equal to 1, that the meaning of this is x is equal to 1 by e. Test fails. Test fails. So this is the situation we have to deal, right? When x is equal to 1 by e, the meaning of this is if you take the reciprocal 1 by x की प्लेस पे e भी आप रख सकते हो. दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे. ये इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. ठीक है, 1 बाई एक्स की प्लेस पे ई रख देंगे, खत्म. बहुत आसान हो जाएगा. तो नेक्स्ट पेज. सो un प्लस 1 वैल्यू अभी लॉग अप्लाई नहीं करें अपन. बी केयरफुल. इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन रेस्ट टू द पावर ऑफ एन इंटू 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई ई. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ओके, टेकिंग log on both sides. log of un by un plus 1 value is equal to log of un by un plus 1 is equals to log of e by 1 plus 1 by n raised to the power of n. That is log a by b form, famous formula. अभी अपन यूज करें so many times. log a minus log b 1 plus 1 by n raised to the power of n. Now this is equal to log e value is 1 minus log x power n को फिर लिख सकते हैं अपन n log x. Now here we have to apply the formula and expand this one. So this is 1 minus n into, I am writing the expansion of this. The expansion of this is 1 by n minus 1 by 2n square. Okay, plus 1 by 3n to the power of 3 minus and so on, bracket close. Multiply with these two, this one with this one with this. What happened? This is 1 minus n and n cancel, minus 1 minus into minus plus 1 by 2n, n and n cancel, minus 1 by 3n square. And now these two are cancelled. Now multiplying n on both sides. N times log of un by un plus 1 value is equals to n times, how many terms are there? 1 by 2n minus 1 by 3n square. 1 by 2n minus 1 by 3n square. And be careful that this will be going to this term. This will be going to this term also. N times log un by un plus 1 value is equals to
n and n cancel 1 by 2 left off, minus n and square cancel 1 by 3 and left off. Okay, now finally Yes. taking limit n tend to infinity n times log un by un plus 1 is UN equals to plus limit limit n tending to infinity. This is 1 1 by by 2 2 minus C. minus 1 by 3n. Now limit will go to both of these two terms. It will go here. Limit of the constant is constant itself. It will go here. 1 by n becomes 0. 1 by 2 is less than 1. By logarithmic test. By logarithmic test. Series divergent, and mention that we are dealing with the situation when 1 by x is equal to e. But the problem is not completed here itself. Hence, given series, hence given series convergent. Please write the full form in exam. When x is less than, when x is less than 1 by e, divergent, divergent दो केसेस में हो रही है यहाँ पर. When x is, sorry, Okay. x is greater than में भी हो रही है और 1 by भी हो रही है. This is that. Finished. Discussion of this topic will be completed. बहुत मुश्किल से मिले मगर 3 क्वेश्चन मिले. लॉगरिथमिक टेस्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे बॉस. यही कर लेना है आपके लिए बॉस, और कुछ नहीं करना है लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए, बस इतना काफी है. राइट, 3 जी प्रॉब्लम सर। को अच्छे से पेपर में लिखिए, प्रैक्टिस करिए. एक सिर्फ 2 फार्मूलों के ऊपर अपना खेल खत्म. ये 2 फार्मूलों के ऊपर खेल खत्म हो रहा जो अपन बताए थे अभी. लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन और 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर एन. मैं अभी ये क्लास एंड अप होते कि इमीडिएटली दोनों भी सिलेबस M1 और M2 का अभी आपके ग्रुप में सेंड कर. जी सर। Yes. I hope this is clear for you. Next class will be tomorrow. Tomorrow is there, but morning I'll let you know. मैं बोलता हूँ आपको मॉर्निंग में है या शाम में है क्लास, मैं आपको बोलता हूँ. ठीक है, सर मैसेज अगर करता हूँ. फजर सर में ले सकते तो लीजिए सर एक क्लास। अरे फजर में ले सकते तो नहीं ले सकते बॉस, अपने लिए फजर है, सबके साथ देखना रहेगा अपने लिए. ठीक है. क्या सर नहीं है सर, सर ये सिलेबस फजर? he जल्दी is कंप्लीट also हो तो ready, करिए। sir. हम्म. She is also ready for Fajar. I don't know what is fajr, sir. What is it? Morning 5 o'clock or 6 o'clock like that. Morning. Yeah, sir. If you're taking, I'll wake up. हाँ, ओके, आई विल लेट यू नो. इमीडिएटली वी कैनॉट डिसाइड. पहले तो प्री प्लान रहना पड़ेगा मेरे को उसके लिए. अभी Yes, तो yes. ये क्लास तो एंड अप कर देंगे, फिर अभी जो भी है डिस्कशन व्हाट्सएप पे करेंगे. सर Sir, नॉर्मली can you कितने डेज में अपना please सिलेबस कंप्लीट upload होता? this? सिलेबस कितने दिन वैसे में भी होता वैसा मत बोलिए आप. अपन पढ़ रहे 15 दिन, एक साल का 6 महीने का सिलेबस है ये. समझे आप, 6 महीने में कंप्लीट होता है ऐसा बोले. Sir, can you please upload this? यस यस, इट्स अपलोडिंग इज Sir, गोइंग ऑन. also the first day's videos also. हाँ ठीक है, सब करता हूँ मैं यहाँ पर रखे हुए डेस्कटॉप पे. 1 बाय 1 सब करता हूँ अपलोड. ठीक है, लेट अस Sure, एंड अप sir. दिस मीटिंग. Okay, sir. Okay, Thank sir. you.